नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय यादव है। वीडियो में दोस्तों हम लोग सैमसंग के SCX-4601 प्रिंटर को इंस्टॉल करेंगे। प्रिंटर के फीमेल जैक को, पावर जैक को प्रिंटर के साथ में कनेक्ट करेंगे। प्रिंटर को कनेक्ट करने के बाद में फिर दोस्तों हम लोग अपनी प्रिंटर के कार्टेज को प्रिंटर के अंदर लगा देंगे। कार्टेज को लगाने के बाद में फिर हम लोग अपने प्रिंटर की USB केबल को अपने प्रिंटर के अंदर लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग प्रिंटर के सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। सॉफ्टवेयर दोस्तों डाउनलोड होने के बाद में फिर हम लोग इसको अपने PC के अंदर इंस्टॉल करेंगे।
सॉफ्टवेयर दोस्तों इंस्टॉल होने के बाद में फिर हम लोग अपने प्रिंटर से दोस्तों इसमें प्रिंट की कमांड देंगे। कमांड देने के बाद में दोस्तों प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलने लग जाएगा। दिखाइए प्रिंट। के बाद में फिर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके चेक करेंगे।